So, hey guys, welcome to the second and final session of the Compose Camp. So, in the last session, Aman Bhaiya taught us about the basics of Kotlin and Jetpack Compose, and in this session, he is going to go further into Jetpack Compose. So, let me just welcome the speaker for our session, Aman Kumar, who is also the Compose Camp facilitator and an amazing Android developer. So, hello, hi Ayush. Hi, what's up? So, मस्त है यार, सब सही है। और बताओ, पूजा वूजा आ गया, वीकेंड से सबका वीकेंड बर्बाद कर रहे हैं हम लोग बैठ के यहाँ पे। एकदम मस्त प्लान चल रहा मस्त प्लान चल रहा है ना। ठीक है, तो है। ऑल द स्टार्ट बेस्ट। करते हैं भाई। हाँ यार, चलो go। ठीक है, सो लेट अस शेयर दिस स्कूल ऐड करना गुड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। So about today's session, it is like it's called thinking in compose. So we'll like try to figure out कि compose में कैसे क्या होता है, ठीक है? So that is today's agenda. compose के बारे में सीखनी है, basics, mainly basics। और start कैसे करेंगे कि अगर किसी को एंड्रॉयड आता है ना, बेसिक एंड्रॉयड, जस्ट उसको एक पहले नोशन दे देंगे व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन कंपोज एंड लाइक जो अपना नॉर्मल नेटिव से एंड्रॉयड होता है, एंड देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। सो सबसे लाइक पहले सबसे like the best thing it is like कि whenever you are doing it in compose now, you need to describe what rather than how. ठीक है, what do I mean by that? So basically in our native Android development, what happens कि we need to like define every click action, and we need to create separate states and all that, and we need to define how the things will work, like how the flow of data will do, like how uh, specific tasks will be working. But in Jetpack Compose, we just need to explain ki what will happen. Jetpack will like design your UI accordingly, like according to the question what. ठीक है, क्या बोले इसको अब समझते हैं। सो चलो, अगर लेट्स थिंक अबाउट कि आज का जो एजेंडा है इसको क्लियर करते हैं। वी आर सीइंग अ सिंगल लाइक दिस स्क्रीन राइट, तो विल फिगर आउट कि हाउ विल बी थिंकिंग इन एंड्रॉइड टू लाइक इन लाइक कंपोज, लाइक एंड्रॉइड इन कंपोज टू मेक दिस entire screen। ठीक है, तो go to this site to get the sample of it। ठीक है, तो moving on, so this is what we are thinking first। तो अब इसके बारे में जो क्वेश्चन है अपने पास कि you can see there is three type of things। ठीक है, first we have a image followed by a text and a radio button। okay, so this is our question to be solved, how to create this image। ठीक है, तो answer of that will be something like this in native Android। So what will you do now? You will define a linear layout। ठीक है, what is a linear layout in Android? If we know, तो linear layout is something like where you can place things linearly। जैसे कि last session में अपन बात किया था ना, rows and columns, तो वही चीज है। ठीक है, तो वो Android में ऐसे लिखना पड़ता है। You need to create a file जो कि XML टाइप का होगा। There you need to create these three things: the image view, the text view, and the radio button. And then you'll go to the activity
the activity which will be like the survey question activity that will be there, and in that activity you need to like take the reference of that XML file code into this particular like activity. After getting the reference, you will be like starting the process of setting the data in the views in like your onCreate function. And after doing all that, you will be having something like this. So you see, there is like procedural things are happening. Like first, you are creating the UI, then you are like taking the reference, then you are setting the data. So it's three steps in total. Okay. So and with these many things, you need to like go with the flow. What happens now? Ki if we click on it, okay, so we need to maintain another state for it, like how the click will handle for each and every UI. Click will do something, and then with the multiple UIs, it is like it will definitely become a bit complicated. Okay, so welcome to the world of Jetpack Compose. Okay, so in Jetpack Compose, what happens? We still have the same problem. We still need to figure out we still have an image, a text, and a radio button. Okay. So rather defining how to do it, we will simply define what to do. So what I mean by that, we will simply create a composable in Kotlin itself in that particular activity itself. We will create a composable. We need not to create an XML file. And inside that, we will just define a row. And inside that row, we will have image, text, and radio button. See, uh, inside the image, we are directly assigning image to the, like, we are directly passing all the parameters required to load that image to the image and the text to the text. So we are actually saving that three-step uh, process that we've been gone through just before भी इससे पहले वाली एंड्रॉइड वाली थी एक नेटिव एंड्रॉइड वाली थी. सो एंड्रॉइड विद जेटपैक कंपोज में आप इन सारे चीजों को एक जगह क्वांटाइज करके डाल सकते हैं. यू नीड नॉट टू मेक सम रेफरेंसेस एंड यू सी थिंग्स आर pretty much in place. ठीक है. तो हाँ, so this will definitely create this thing. अब we need to think about the touch action of it, right? So yeah, as we've seen here, this is what, not how. So अब टच एक्शन के लिए हम लोग देखते हैं टच एक्शंस कैसे क्या करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली एंड्रॉयड में क्या होता है ना कि आपको टच के लिए एक अलग से पूरा एक नया यूआई बनाना पड़ता है, और उस पूरे नए यूआई के अंदर आपको लाइक हर एक चीजों को अलग अलग स्टेट को मेंटेन करना पड़ता है. हर एक टिपिकल स्टेट के लिए अलग अलग चीजें होती हैं. So in Jetpack Compose, you will be like your UI is handled, like there is an event handler which handles your entire UI. Just see, depending on the state, UI is formed. If the state is changed, if it is a new state, a new UI will be formed, and the entire logic of it will be written in what you want instead of. Okay. So see, inside your radio button, we will define a simple composable thing called on click, and on click of that, we will just change a state. Just say selected is a state, which is of type boolean, and depending on the state of selected, we will basically have different kind of like we'll see how this done. So basically, we'll define a variable called selected, और वो एक var टाइप का boolean होगा. और अब देखो, अब जहां पे भी हम लोगों को चेंजेस चाहिए होंगे ना, so this is a state that we already formed, and we'll use this particular state to लाइक जैसे कि अगर हमको अपने टेक्स्ट व्यू में कोई और नाम चाहिए थे, like once it is selected, the name of that particular block that we are creating, उसका नाम चेंज होना चाहिए, like जो आंसर जो है वो चेंज हो जानी चाहिए. You will just simply write a if else condition inside the like your text जहाँ पे सेट कर रहे हैं वहाँ if else condition ले लेंगे by using the selected thing, और
अगर selected है तो we'll write something और नहीं है तो we'll write something. So we need not to create separate UIs, and how it is done, it is not like implemented, but वो खुद से re-render करेगा. We'll see what a re-render is और उसके बाद वो तुमको दे देगा. ठीक है. तो these other things describe what, not how. क्योंकि हम लोग देखें कि अगर हम लोग को एक स्टेट के बेसिस पे जो भी चाहिए होता है, we'll define it by the state कि what we want for a state, and now how we want it, that is handled by the Jetpack Compose. ठीक है. UI elements are functional, like are functions. हाँ. So UI elements जो होती हैं, those are like simple composable functions. ठीक है. स्टेट कंट्रोल्स यूआई. ठीक है. जैसे अभी हम लोग बात की कि इज सेलेक्टेड इफ इट इज अ स्टेट, तो इट कंट्रोल्स द यूआई. अगर टेक्स्ट के अंदर देयर विल बी लाइक, अगर एक टेक्स्ट होता है जब वो सिलेक्टेड फॉर्म में होता है, एक टेक्स्ट होता है जब वो नॉन सिलेक्टेड फॉर्म में होता है, तो दैट कैन बी कंट्रोल्ड. सो लाइक एक्चुअली स्टेट कंट्रोल्स द यूआई, नॉट यूआई को स्टेट के बारे में. लाइक वी नीड नॉट टू क्रिएट मल्टीपल यूआईज फॉर सेपरेट स्टेट्स. ठीक है. और इवेंट्स कंट्रोल स्टेट. और जैसे जो इवेंट होती है ना, फॉर एग्जांपल अब क्लिक इवेंट हो गई, तो वो हमारा स्टेट को कंट्रोल करती है. सो वी आर गेटिंग इनटू द फ्लो हाउ, लाइक हाउ द कंपोज वर्क्स. ठीक है. तो लेट्स नाउ understand briefly about the composable functions. Okay. So, like what I'm trying to do today now, कि we'll finish this thing rapidly, क्योंकि it's more like theory part, जहाँ पे आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं चाहिए होंगी. आपको like normally आप स्लाइड के थ्रू समझ सकते हो कि how you will do it. At last, I've kept a section of like मटेरियल यूआई. वहाँ भी देख लेंगे हम लोग हाउ मटेरियल यूआई वर्क्स. और सिंपली उसके बाद थोड़ी देर विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट इन जनरल, लाइक एंड देन एंड्रॉइड डेवलपमेंट, हाउ यू कैन get into it or how you can excel in this particular field. ठीक है. सो ये पहले बताना चाहिए था, अभी बता रहे, कोई नहीं. सो मूविंग ऑन. ठीक है. तो हाँ, तो ये अपना साइट था, ये हम लोग को बनाना है. ठीक है. तो ये मतलब ये पेज बनाना है. इस साइट पे जाके अपन आप लोग देख सकते हो, देयर विल बी सैंपल्स. क्या. तो हाँ. सो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे. अब हम लोग को देखना है कि कंपोजेबल फंक्शन कैसे काम करती हैं. तो सबसे पहला चीज, द एनोटेशन कंपोजेबल इटसेल्फ. कंपोजेबल किसी भी फंक्शन के ऊपर हम लोग लगाते हैं. आई गेस आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लाइक प्रीवियस सेशन. ठीक है. तो इसमें क्या होता है ना कि जब भी हम लोग किसी फंक्शन के ऊपर कंपोजेबल का टैग लगा देते हैं, दैट मेक्स द पर्टिकुलर फंक्शन एज अ कंपोजेबल फंक्शन. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल कि हम लोग के पास एक अगर कंपोजेबल फंक्शन बनाना होता, तो अब देखो इसमें क्या है ना कि अब यहाँ पे हम लोग यूआई देखते हैं. यूआई के अंदर क्या है कि ये जो एक पर्टिकुलर थिंग है ना, इसका एक लिस्ट है. ठीक है. We will be having a list of answers, and using that list of answers, we will be like creating the entire. Just see क्या होता है ना कि will be कर्सर मोस्ट प्रोबेबली दिख रहा है. तो यहाँ पर आंसर विच इज अ टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ आंसर्स. अब उसमें क्या होगा कि हर एक आंसर के लिए वी क्रिएटेड अ ब्लॉक. ठीक है. जस्ट सी कि ये जो ब्लॉक है ना, दिस इज फॉर ईच पर्टिकुलर आंसर्स. अब ये जो फंक्शन है, इसको हम लोग को लाइक इन अ लिस्ट कॉल करना है फॉर मल्टीपल आंसर्स. ठीक है. सो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग कि वी आर क्रिएटिंग अ कंपोजेबल फंक्शन. ठीक है. और उस कंपोजेबल फंक्शन के अंदर आई विल पास अ लिस्ट ऑफ, जिसमें आंसर्स रहेंगे, लिस्ट ऑफ आंसर्स. और उसमें फिर हम लोग एक कॉलम को डिफाइन करेंगे. इनसाइड दैट कॉलम हम लोग एक फॉर ईच लूप चलाकर सिंपली क्या बोलते हैं इसको, सिंपली उस वाले जो पर्टिकुलर आंसर सर्वे सर्वे आंसर वाला जो कंपोजेबल है, विल कॉल इट. ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन जस्ट सिंपली क्रिएट. अब क्या होता है ना कि अगर ये अपना जैसे कि नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट होती. ठीक है. तो इन दैट व्हाट विल हैपन कि हम लोग एक यूआई एलिमेंट डिफाइन करते हैं. ठीक है. अब उस यूआई एलिमेंट को हम लोग को एक व्यू के अंदर पास करना पड़ता है, जो कि
लिस्ट व्यू हो सकता था या फिर रिसाइकलर व्यू हो सकता था. मोस्ट प्रोबेबली नाउ डेज वी यूज रिसाइकलर व्यू. रिसाइकलर व्यू के लिए हम लोग को एक अडेप्टर बनानी पड़ती है. अब उस अडेप्टर को हम लोग को एक रिसाइकलर व्यू के अंदर एक रिसाइकलर व्यू का कंटेनर बनाना पड़ता, और उस कंटेनर के अंदर हम लोग उस अडेप्टर का लॉजिक को यूज करते हुए एक लिस्ट पास करते हैं और वो सारे चीजों को रेंडर करता. तो ये जो चीज हम लोगों ने देखी ना, दिस इज डन इन अराउंड कितना 15 लाइन्स. ठीक है. तो इन एंड्रॉइड व्हाट वुड हैव हैपेंड, नेटिव एंड्रॉइड, तो ये काम करने के लिए लाइक दिस इज लाइक फॉर दिस पार्ट ओनली आई लव जेटपैक कंपोज अ लॉट, कि फॉर मेकिंग दीज मैनी यूआई तुमको अराउंड like it took 15, it would have taken around 200 lines of code. ठीक है. तो that is fun of using Jetpack Compose. और यार परफॉर्मेंस में थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं. लाइक आई विल से कि इन जेटपैक कंपोज व्हाट हैपेंस कि परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी डाउन दिखती है व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट. लेकिन आई विल से कि ये क्यों होता है ना, क्योंकि जेटपैक कंपोज इज वेरी न्यू राइट. ठीक है. तो इसका उतना ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाया. सो बाय द टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होगी, जेटपैक कंपोज विल बिकम लाइक ग्रेट फास्ट डेवलपमेंट. इसमें इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ फ्लटर बैकग्राउंड आई विल से ना, तो उसमें क्या होगा ना कि आपको काइंड इट विल बी लाइक अ बिट familiar things will be happening, like scaffold and all इसमें भी होती है. तो you will see, but हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो इस वाले फंक्शन के बारे में आई गेस आई ऑलरेडी टोल्ड यू. क्या होगा ना, वी विल क्रिएट अ फंक्शन एंड इन दैट विल पास अ आंसर ऑफ लिस्ट, एंड देन इनसाइड अ कॉलम वी विल लाइक यूज दैट पर्टिकुलर लिस्ट, और जो हम लोगों ने एक सिंगल एलिमेंट के लिए यूआई बनाया था उसको वी विल कॉल अगेन एंड अगेन एंड अगेन जब तक वो लिस्ट नहीं हो जाता है. सो अपने पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, like पूरी लिस्ट. See, this is how it will be done. So I'm not coding right now क्योंकि I don't see कि मतलब the same things are written over there. तो कोड करके I don't wanna make it a bit lengthy. 2 घंटा का सेशन, सारे कोड्स अवेलेबल हैं. Go to that link, you will find everything. अभी समझ लेते हैं how it is working. ठीक है. Uh, so basically कि you cannot create a val inside a list. अब भाई ऐसा क्यों हो सकता है, तो ये सोचना पड़ेगा. uh, अब इसमें कुछ इश्यूज आएंगी. ठीक है. You cannot have a you cannot hold a reference to them, like holding a reference to a single answer and update it later content it may pass like. हाँ ठीक है. तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं ना ये लोग कि आप जो कंपोजेबल्स होती है ना वो इम्यूटेबल होती है. ठीक है. सो बेसिकली आप एक कंपोजेबल का रेफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. So a composable cannot be referenced and cannot be changed any further. So that's why we cannot create an instance of a composable. ठीक है. क्योंकि composable एक val तो होता नहीं है, वो fix तो होता नहीं है. It will be a changing thing, like it's a changing thing of, depending upon the state that we already discussed. ठीक है. तो फॉर इच लूप के बारे में हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं. डिपेंडिंग ऑन द आंसर्स, कितने आंसर्स है हमारे लिस्ट में, वी विल बी हैविंग अ फॉर इच लूप, और इस लूप के अंदर सारी चीजें लाइक पड़ी हुई होंगी. ठीक है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. तो बेसिकली हाँ, एज आई सेड कि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट वी कैन डायरेक्टली पास द लाइक द स्टेट ऑफ द लिस्ट, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक टेक्स्ट रख सकते हैं. जस्ट एग्जांपल, अगर टेक्स्ट नहीं है तो इसके लिए अब क्या करना पड़ता है ना, इन नेटिव एंड्रॉइड वी वुड हैव बीन क्रिएटिंग अनदर पेज, और उस पेज को यहाँ पे सेट करना पड़ता है. सो लेट्स सी कि विद this thing it is easy to keep a track of your state. ठीक है. uh, don't do this. This shouldn't be side. This shouldn't be a side effect. Did show single choice question.
तो अब क्या होता है ना कि हाँ मतलब अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे इसको रख सकते हैं, समझ रहे हो, मतलब बेसिकली कि हम लोग एक स्टेट और डिफाइन करके रख सकते हैं, फास्ट एंड नो साइड इफेक्ट, ठीक है। गुड, ठीक है। तो मूविंग ऑन, अब हम लोग को स्टेट्स के बारे में समझने होंगे कि हर एक आंसर के अंदर वी कैन पास अ सिंगल स्टेट। अब कैसे हो सकता है ना कि अगर हम लोग एक स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं एट द आंसर लेवल, और उस पर्टिकुलर स्टेट को वी विल बी यूजिंग टू परफॉर्म द क्लिक एक्शन, ठीक है। अगर वो सेलेक्टेड है तो ऐसा दिखेगा, नॉन सेलेक्टेड है तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और हम लोग एक आंसर का लाइक एक बना लेंगे कि कौन सा आंसर सिलेक्टेड है, और वहां से जो भी आंसर रहेगा उसको निकाल लेंगे। और उसको हम लोग लाइक ऐसे बना सकते हैं कि अगर इफ इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो वी विल बी हैविंग अ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड आंसर्स, और वो हम लोग जो अपना सिंगल चॉइस क्वेश्चन है उसके अंदर डिफाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर सेलेक्टेड स्टेट का आंसर इज इक्वल्स टू आंसर तो वो सेलेक्टेड आंसर, तो समझ रहे हो, जो भी करंट सेलेक्टेड आंसर है उसका स्टेट जो है वो हमारा like, जो करंट फॉर लूप के अंदर जो एलिमेंट है वो दोनों अगर इक्वल है तो वो सेलेक्टेड होगा, राइट। लाइक आर वी गेटिंग द नोशन कि अगर जो सेलेक्टेड स्टेट का आंसर है जो अभी हम लोग सेलेक्ट किए हैं, और जो आंसर हम लोग अपना लिस्ट से निकाल रहे हैं दे आर सेम, तो ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, so some simple stuff. Then moving on answer selected, हाँ तो we can have something like on answer selected वाला stuff। अब क्या हुआ कि आंसर सेलेक्ट होने पे क्या होना चाहिए, तो अगर आंसर सेलेक्टेड है तो in that case this will kind of happen, and just we can get the notion like it's a simple thing, ठीक है। कि जो यूआई होता है वो स्टेट लाइक इट गेट्स अ स्टेट फ्रॉम द इवेंट हैंडलर, और इवेंट हैंडलर को एक इवेंट प्रोवाइड करता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग हैज हैपेंड। सो यही मेरे से हम लोग समझना चाह रहे थे हाउ यूआई लाइक इवेंट चेंज स्टेट, ठीक है। अब कंपोजिबल फंक्शन कैन एग्जीक्यूट इन एनी ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट। क्या होता है ना कि कंपोजिबल फंक्शंस की कोई ऑर्डर डिफाइंड नहीं होते कि दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इट विल बी वर्किंग। अब अगर तुम्हारे पास कोई ग्लोबल वेरिएबल है जो तुम हर जगह से चेंज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि इससे सिक्वेंशियल नहीं हुआ, अगर ये कंपोजिबल फंक्शन पहले करो तो ये पूरा रेंडर हो जाएगा, तो ये वाला रेंडर हो जाएगा, तो ये वाला रेंडर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम लोग इस स्टेट को चेंज करते हैं ना, इट हैपेंस लाइक दैट कि जब आप एक स्टेट चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट पे कोई एक तुम्हारा एलिमेंट का ब्लॉक इज डिपेंडेंट, समझ रहे हैं लोग ये बात का, लाइक अगर कुछ चेंज हो रही है तो वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइक अपना यूआई को ही चेंज करेगी, वो पूरा ऐप को चेंज नहीं कर रहे हो, वो एक छोटा सा लाइक एक जगह क्लिक कर रहे हो टिक मार्क आ रहा है, वो इस वाले बस ब्लॉक को चेंज कर रही है ना, इस पूरे एप्लीकेशन को चेंज नहीं कर रही है। तो बस वो टिक मार्क वाला ब्लॉक वापस से कॉल होगा, इट विल बी रीड्रॉन लाइक रिकॉन्फ़िगर्ड लाइक, समझ रहे हो, रिकम्पोज्ड। तो इसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता। अब उसके अंदर अगर कोई तुम प्लस प्लस का कोड लिख के रखे हुए हो, कोई इंटीजर को बढ़ा रहे हो, तो भाई वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट स्क्रीन, मिडिल स्क्रीन, एंड स्क्रीन, कंपोजिबल कैन रन पैरेलल, हाँ मतलब ऐसा भी है कि एक बारी में इट्स नॉट की सिंगल कंपोजिबल बनेगी, तीनों कंपोजिबल चारों कंपोजिबल एक साथ में बन सकता है, इट्स लाइक इट कैन यूज मल्टीपल थ्रेड्स, और मतलब ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि वी आर हेयर, बट दिस वाज फॉर दिस इज अ कोड स्निपेट, द कोड रन साइड इफेक्ट फ्री एंड ट्रांसफॉर्म्स इनपुट टू यूआई। बट हाँ देखो ये एक सही सा कोड है, ठीक है। ये कोड प्रॉपरली काम करेगा, बट द प्रॉब्लम विद दिस कोड ना कि ये तुमको ऑड बिहेवियर्स दे सकता है, क्योंकि हम लोग आइटम प्लस प्लस कर रहे हैं लाइक दिस स्टफ। इसी के बारे में पहले समझाना चाह रहे थे कि अगर आइटम प्लस प्लस से ऐसा कुछ भी काम करेंगे तो दिस विल बी अ बिट इम्पैक्टफुल, ठीक है। तो रिकम्पोजिशन स्किप्स एज मच एज पॉसिबल,
तो रिकम्पोजिशन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, इट्स लाइक रिकम्पोजिशन जो होती है, वील ट्राई टू लाइक जो कंपोज है, इट ट्राइज टू स्किप द रिकम्पोजिशन जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, और हम लोग को भी ट्राई करना चाहिए कि इफ अ थिंग इज नॉट रेंडरिंग तो उसको, मतलब अगर इफ इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर स्टेट तो उस वाले स्टेट को वहाँ पे मेंटेन करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है। तो in this snippet, if the name string changes, the header footer will not be, हाँ मतलब exactly तो my point कि अगर just say कि ये जो अगर name है, अब बस नेम चेंज हो रहा है ना, तो दिस पर्टिकुलर कंपोजेबल विल ओनली बी कॉल्ड हेडर, और फूटर वाला कंपोजेबल का कॉल नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि बस जहाँ पे ग्रेटिंग का नाम जो बंदा का आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल एक ग्रेटिंग स्क्रीन है जहाँ पे हेडर है, कुछ फुटर है, और बीच में ग्रेटिंग आती है, तो हेडर और फुटर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी इंसान के नाम से कि वहाँ पे नाम हेडर और फुटर में नहीं दिख रही है। तो ऐसे इट विल बी लाइक सॉल्विंग द इशू ऑफ recomposition। ठीक है। Recomposition is obviously optimistic, तो this means कि compose, ठीक है, finishes decomposition before parameter change again, और हाँ मतलब ऐसे होता है कि एक कंपोजिशन पहले फिनिश होता है एंड देन रिकम्पोजिशन दोबारा से होता है, मतलब एक बार बिल्ड हुआ, फिर तुमने पैरामीटर चेंज किया, फिर वो बिल्ड हुआ। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। रिकम्पोजिशन फंक्शंस माइट रन फ्रीक्वेंटली, हाँ मतलब ऐसे होता है जो भी कंपोजेबल फंक्शंस होता है, जो रिकम्पोजेबल होगा एक काइंड ऑफ वो फ्रीक्वेंटली रन करती है, क्योंकि आप चेंज करते जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप टैप कर रहे हो, अनटैप कर रहे हो, टैप अनटैप, टैप अनटैप, तो वो बार बार कॉल होती है। ठीक है। तो सो क्विक समरी अबाउट कि कंपोजिबल फंक्शन जो होता है ना, वो हम लोग एनोटेशन लगाते हैं कंपोजिबल का, और इट्स अ क्विक एंड इजी वे टू क्रिएट कंपोजिबल्स। कंपोजिबल्स में पैरामीटर डालते हैं, और हम लोग एक म्यूटेबल स्टेट को यूज करते हैं, और रिमेंबर को यूज करते हैं। स्टेट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, तो वो लाइक चेंजेबल होता है। और जो होता है कंपोजेबल शुड बी साइड इफेक्ट फ्री। तो मतलब हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे स्टेट के अंदर को उसको मेंटेन करा के चलना है तो उससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन। कंपोज टूल किट। चलो अब थोड़ा सा टूल किट के बारे में समझ लें। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ये टूल किट है। टूल किट क्या है? ये एक्चुअली मटेरियल यूआई का लाइक मटेरियल डिजाइन का फॉर्म है फॉर आवर कंपोज। ठीक है। अब क्या होगा ना, अब हम लोग जो ये यूआई देख रहे थे ना तब से, किधर गया? अ, हाँ, ये यूआई देख रहे थे ना, इसको अभी तक हम लोग बस एक इमेज, एक टेक्स्ट और एक बटन प्लेस किए। यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर सम राउंडेड कॉर्नर्स, इसमें थोड़ी एलिवेशन है, थोड़ा ये उठ के आ रहा है सामने। तो ये सारा चीज जो है ना, वी नीड टू डिफाइन इट सेपरेटली यूजिंग मॉडिफायर्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो इन सारी चीजों के लिए ना, व्हाट वी डू, वी यूज द जेटपैक कंपोज के लिए क्यूरेटेड मटेरियल डिजाइन। ठीक है। सो दिस इज द मटेरियल डिजाइन। अब क्या होता है ना कि मटेरियल का एक पर्टिकुलर थीम होता है। सो हर एक एप्लीकेशन का एक थीम होता है, जैसे लाइट थीम और डार्क थीम होती है ना हर एक एप्लीकेशन की। ऐसे देयर कैन बी मल्टीपल थीम्स। एक लाइट थीम का मटेरियल थीम हो सकता है, ऐसा मतलब लाइक मल्टीपल थीम्स हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन द थीम वी सेलेक्ट। सो बेसिकली हाँ मतलब अगर डार्क थीम है तो देयर कैन बी वन थीम, लाइट थीम है तो देयर कैन बी अनदर थीम, ऐसे करके वी कैन डिफाइन मल्टीपल थीम्स और वी कैन कीप मल्टीपल थीम्स। ठीक है। टाइपोलॉजी क्या होता है ना, टाइपोग्राफी मतलब, तो टाइपोग्राफी मतलब वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक टेक्स्ट। लाइक एक होता है ना जैसे अगर किसी ने एच टी एम एल करा है, तो एच टी एम एल में एबीसी H1, H2, H3, तो we can customize everything, like we can keep H1, H2, H3 and we can customize कि यार उसका font size कितना होगा, उसके लेटर्स के बीच का spacing कितना होगा, उसका font का weight, like वो कितना बोल्ड दिखेगा, कितना लाइट दिखेगा, we can actually customize everything in our material। ठीक है। एंड वी कैन हैव लाइक शेप्स, जैसे हम बोले ना, जो हम लोग यूआई बना रहे थे उसका जो बॉर्डर था, बॉर्डर वाज नॉट राउंडेड, तो एक राउंडेड बॉर्डर बनाने के लिए वी कैन डिफाइन राउंडेड कॉर्नर शेप, और वहाँ पे हम
लोग साइज डाल सकते हैं जैसे 12 TB, सो दैट विल बी गिविंग अराउंड the edges. ठीक है, so we can also have animations. तो hey, yeah, just go through the slides once like I'm presenting, तो pause करके देख लिया clear. It is not something like am I audible? Most probably I am. Let me check. ठीक है, so there was a small jitter. Continuing with the slides, क्या होगा ना कि इसको full screen कर देते हैं. अब क्या होगा कि हाँ, तो एनिमेशन वाला पार्ट तो ये टॉप ना. अब इसको if we go to slides, so अब स्कैफोल्ड क्या होता है ना, स्कैफोल्ड के बारे में समझना होगा. स्कैफोल्ड अगर अगर किसी ने लाइक अगर करा है फ्लटर तो इस वर्ड से काफी familiar होगा. तो स्कैफोल्ड इज काइंड डमी स्ट्रक्चर फॉर योर एप्लीकेशन जो देता है. उसमें काफी सारे फंक्शंस होते हैं. लाइक टॉप बार का अलग फंक्शन होता है. वी कैन हैव डिफरेंट फंक्शन फॉर फ्लोटिंग एक्शन बटन जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है. सो एंड वी कैन कस्टमाइज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर एप्स नीड. ठीक है, तब देख लो, ये हो जाएगा टॉप, ये हो जाएगा क्वेश्चन सेक्शन और ये हो जाएगा बॉटम. सो दिस इज हाउ इट इज like it is about. तो ये पूरा application अब will be using all of these particular like composables to finish off this like whatever we are trying to create. So basically अब क्या होगा, एक composable बनाएंगे which will be of question string, एक question screen और उसमें questions आएंगे. उसमें should ask permissions. तो क्या होगा ना कि we can have लाइक अगर किसी चीज के परमिशन चाहिए तो हम लोग परमिशन ले सकते हैं. तो एक ऐसा ब्लॉक आएगा एंड देन वी कैन हैव सम एक्शंस एंड ऑन डन और ऑन बैक. ऑन डन और ऑन बैक लाइक नेक्स्ट और प्रीवियस वाला जो होता है ना. सो इसके लिए हम लोग दो दो फंक्शंस लाइक बना लेंगे और वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग. तो थिंग्स यू आर सीइंग हियर ना कि ऑन डन प्रेस्ड, इसको हम लोग हायर ऑर्डर बोलते हैं. हायर ऑर्डर फंक्शंस ये कॉटन में एग्जिस्ट करता है. सो जस्ट गिव इट अ सिंपल गूगल, एक बारी में समझ जाओगे व्हाट इज अ हायर ऑर्डर फंक्शंस. ठीक है, मूविंग ऑन. तो टॉप बार के अंदर वी विल बी सिंपली क्रिएटिंग अ कंपोजेबल जिसका नाम देंगे हम लोग सर्वे टॉप बार. वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस डालेंगे. क्वेश्चन का इंडेक्स में इंडेक्स डालेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का काउंट डालेंगे और बैक प्रेस डालेंगे. एज वी कैन सी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का काउंट और क्वेश्चन का इंडेक्स और कट का जो प्रेस का लाइक जो फंक्शन होगा ना मेरे पास. ठीक है, सिमिलरली वी कैन सी कि यार लाइक गो थ्रू दिस स्लाइड्स यार, मतलब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो इट विल बी टेकिंग सम टाइम. सिंपल गूगल विल डू. क्या हो रहा है ना, बेसिकली हम लोग कोशिश कर रहे हैं, विल ट्राइंग टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, so go through these code. It's not a like a hard code. It's a simple सा code. You can basically have a notion कि कैसे कि स्लाइड का डायरेक्शन है, अगर नंबर ऑफ इंडेक्सेस बढ़ रहा है तो लेफ्ट स्लाइड करना है या फिर राइट स्लाइड करना है, ये हम लोग बस डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, बॉटम वाला जो बार है ना, लाइक अब चेक करते हैं किधर गया दिस पर्टिकुलर बॉटम बार. तो बॉटम जो बार है इसके लिए अब चेक करना पड़ेगा कि हम लोग को एक और कंपोजिबल बनाना पड़ेगा जिसमें अपना लाइक बॉटम का बार होगा जिसमें प्रीवियस और नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन डालना है बेसिकली. तो बॉटम बार में क्वेश्चन का स्टेट और प्रीवियस एंड नेक्स्ट और डन. डन भी आता है ना क्योंकि जब वो क्वेश्चन लाइक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो डन आएगा. ठीक है, तो इन तीनों का प्रेस फंक्शंस को पास करेंगे हम लोग. जल्दी जल्दी चलो. ओके, what is happening with the slides. तो ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं. ठीक है, बॉटम बार, टॉप बार और सरफेस. व्हाट इज अ सरफेस यार, तो सरफेस के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरफेस इज समथिंग, तो इसके बारे में थोड़ी देर पूरे कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या है ना कि सरफेस इज समथिंग, एक
जस्ट समझ लो एक शीट ऑफ पेपर है जिसके ऊपर आपने एक टेक्स्ट व्यू रखा, सो दिस इज कॉल्ड अ सरफेस। ठीक है, सरफेस को वी कैन प्रोवाइड कलर। सी, अगर कलर देना है तो we can provide some color to the surface, like we can modify the surface accordingly. We can provide some शेप, जस्ट अगर राउंडेड कॉर्नर करना है तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड राउंडेड कॉर्नर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन वी कैन हैव बॉर्डर्स, यू सी, सो बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड सम एलिवेशन, देखो ये उठ के सामने आया ना, तो हम लोग वी कैन प्रोवाइड दिस स्टफ also. And basically in material design there are so many things that are created for you. जैसे ये वाला जो स्लाइडर था ना, we are using this particular slider, तो यू कैन यूज एवरीथिंग, यू कैन सी लाइक इससे भी ज़्यादा होती है, लाइक काफ़ी ज़्यादा होती है। सो यू कैन बेसिकली गो टू मटेरियल यूआई का जो साइट है, और वहाँ पे तुम्हारे लिए दीज आर द स्निपेट्स ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर यू, क्यूरेटेड फॉर यू, जस्ट टेक देम अप, और उसमें स्लाइड चेंजेस करने की स्कोप दे के रखती है उन्होंने, और यू कैन जस्ट सिंपली डू इट। ठीक है, सो button color हो गया, and like there are some patterns that needs to be followed, material की ratio होती है, there are some ratios that needs to be followed, ये material की guideline बोलते हैं इसको। just follow these guidelines and you will be able to create some beautiful UIs। ठीक है, so uh, go to this particular site if whenever you are feeling like, तो इस पे चले जाना, और in that you will get entire material design वाला stuff। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड लेआउट तो ऑलरेडी आई गेस लास्ट सेशन में कवर हो गई था। रोज, कॉलम्स, बॉक्स, बॉक्स इज लाइक समथिंग लाइक दिस, एक बॉक्स होता है, इसमें यू कैन बेसिकली पुट मल्टीपल कंपोजेबल्स इनसाइड अ बॉक्स का अंडर स्ट्रक्चर। तो हम लोग रो यूज करेंगे, तो बेसिकली टिल नाउ हम लोग ऐसा कुछ बना लिया। अब बेसिकली इसको बस यूजिंग मटेरियल यूआई वी विल मेक इट लुक बेटर। ठीक है, तो अलाइनमेंट अगर हम लोग डाल देंगे कि वर्टिकली सेंटर का अलाइनमेंट जाएगा, तो देखो जो ये लोग ऐसे था, ये ऐसे हो जाएगा, लाइक दैट। फॉलोइंग दैट वी कैन अरेंज द स्पेसेस बिटवीन, यार कि कितना स्पेस होगा किसके बीच, लाइक बिटवीन द डिजाइंस। ठीक है, and like go to this part for the better understanding of basics of like compose layout। मॉडिफायर्स का बात करें तो व्हाट आर मॉडिफायर्स, सो लेट्स गो टू द मॉडिफायर्स, ट्राइंग टू रश आउट अ बिट। ठीक है, कोई नहीं। तो मॉडिफायर्स क्या होता है ना कि जैसे अगर हम लोग नॉर्मल लिखेंगे ना हेलो कंपोज, दिस विल प्रिंट इट लाइक दिस, लेकिन मॉडिफायर्स हम लोग वो उसको लाइक मॉडिफाई कर सकते हैं, हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं बाय यूजिंग मॉडिफायर। वी कैन बेसिकली मॉडिफाई कि उसका लाइक कितना साइज होगा, उसका विड्थ कितना होगा, उसका हाइट कितना होगा। वी कैन हैव कि यार उसमें पैडिंग कितना होगा, पैडिंग इज समथिंग कि अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो इसके आसपास लाइक ये जगह कितना होगा, दिस इज कॉल्ड पैडिंग। तो वी कैन डिफाइन पैडिंग ओवर देयर। अल्फा, अल्फा क्या होता है ना, अल्फा इज बेसिकली जैसे कि जैसे इसमें तो नहीं दिख रहा होगा, तो ये डोंट हैव सपोर्ट फॉर अल्फा। तो अल्फा क्या करता है ना कि जैसे कोई चीज तुमको ट्रांसपेरेंसी समझते हो ना, कि किसी चीज का कितना ट्रांसपेरेंसी है। सो लाइक इफ इट इज अल्फा 1, दैट मीन्स इज 100% completely visible to you, और जितना अल्फा हम लोग करेंगे उतना फेडेड इफेक्ट आएगा, सो दैट इज वेयर अल्फा इज यूज्ड। क्लिकेबल, क्लिकेबल मीन्स कि हाँ यार क्लिक होने पर क्या होगा। सो इन दिस क्लिकेबल फंक्शन वी एक्चुअली कॉल ऑन क्लिक वाला जो फंक्शन दैट वी हैव। ठीक है, सो दीज आर सम मॉडिफायर्स दैट वी कैन बेसिकली पास। ठीक है, तो वही है सम मोर कि यार बॉक्स है तो उसका एक मॉडिफायर हो सकता है बॉक्स का साइज, एंड देन अलाइनमेंट कि बॉक्स के अंदर हम लोग को कौन सा अलाइनमेंट रखना है। वी कैन हैव बॉटम एंड बॉटम स्टार्ट, स्टार्ट लाइक टॉप स्टार्ट टॉप एंड, इसे करके वी कैन हैव सेंटर, कैन हैव मल्टीपल अलाइनमेंट्स। ठीक है, तो क्या हुआ, यूजिंग एवरीथिंग वी कैन जस्ट पैडिंग कैसे लगा सकते हैं, ये कॉर्नर रेडियस कैसे कर सकते हैं, इनके बीच का स्पेसिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। सो एक गंदा सा दिखने वाला यूआई से वी कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस यूजिंग मटेरियल फ्रॉम मॉडिफायर्स। ठीक है,
नेक्स्ट अप अपने पास हम्म, तो यहाँ तक आ गए हैं। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है ना कि हम लोग बस वही है कि इसमें एक और मॉडिफायर यूज करेंगे एंड देन विल प्रोवाइड सम पैडिंग। फिल मैक्स विड्थ अगर जो एंड्रॉइड करते हैं वो पहले से इट इज समथिंग सिमिलर टू मैच पैरेंट। ठीक है। क्या होगा कि जितना बड़ा स्क्रीन है उसका पूरा एरिया वो कवर कर लेगा। एंड देन आउटलाइन अगर प्रोवाइड करना है तो देर इज अनदर सरफेस के अंदर देर इज अ फंक्शन कॉल्ड बॉर्डर। वहां पे हम लोग बॉर्डर स्ट्रोक का पैरामीटर पास कर सकते हैं। दिस विल क्रिएट सिंपली दिस बॉर्डर। और गो टू कंपोज बेसिकली यही है कि देर आर lot of modifiers more than that, or you can just play around the modifiers. So this makes us like takes us to the end of the slides. ठीक है। और आफ्टर हैविंग एवरीथिंग ऐसा हो जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गो थ्रू ना कि यार इतना ही नहीं होता। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन Jetpack Compose दैट यू कैन लर्न इन नॉर्मल एंड्रॉइड दैट यू कैन लर्न। अब क्या होगा कि इफ यू आर वाचिंग सम सेशन लाइक दिस और किसी का भी लाइक एक वीडियो देख के आते यू लर्न अ pretty much like you will like understand how to think in compose, but after that you need to go a step further. तो अब उसके बारे में let's talk about development in general कि once you get the notion from any video, from any session or something, उसके बाद क्या करें, how to become a Android developer out of it। ठीक है। So this is just I won't say this is not even a day one. This is something you are just willing to do and you are here to understand the basic facts of it. But after that, your day one starts with Google. Just go to Google. This is where your day one starts. Okay. When you start, okay, Google, I'm not trying to. Okay, so my watch actually is doing okay Google stuff. No worries. Uh, Still, so when you go to Google, you will be having like a lot of questions, okay, from this session only. Yeah, if you are not having any questions from this session only, so start with the project. If you are having questions, what are modifiers? To just say go say compose ka modifiers. Just simply is else are वो सारी words हट जाती हैं तो what are the keywords उसको बस simply type करो in the Google और enter मारो। तो आपको बेसिकली क्या होगा ना, यू विल बी हैविंग समथिंग लाइक दिस इज द फर्स्ट थिंग फ्रॉम डेवलपर google.com। अगर इफ यू आर एंड्रॉइड डेवलपर, दिस इज द प्लेस यू स्पेंड like half of your life, half of your development life. So this is basically Android का documentation। ठीक है। This is where everything about Android is written। You just need to go through it। So just see कि if you want to know कि what is match parent size in box, तो you can give it a read। You can simply give it a read how it is written, क्या होता है, कैसे होता है। So they actually teach you by making a simple project kind of structure। ठीक है। They take an example और उस एग्जाम्पल को आगे फर्दर समझते रहते हैं। ठीक है। सो कभी भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट करने का सोचो ना, जस्ट सी कि अगर ये क्लिकेबिलिटी कैसे आया। तो दे हैव रिटन अ कोड फॉर इट। डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट इट like most of us do। Just don't go to Stack Overflow, copy the snippet, post it। This is not how you'll become an Android developer, like not become a developer। you I'm not saying कि copying from Stack Overflow is not a thing you need to do। आपको करनी पड़ेगी, वो तो आप करते हो। in even in industry level when you come there are a lot of codes that are directly copied and pasted from Stack Overflow। तो ऐसा नहीं है, you will do that thing, but जब initially you are a developer, you are trying to become a developer, first thing you need to do is to like understand the basic notion of code, how it is working। Like these are some simple codes ना, तो just check out कि modifier के अंदर यार clickable लगाने से ये देखो ये click होती है। So this kind of stuff you need to understand from like from the
documentation from first thing is documentation, right? जिसके बारे में तो हम लोग बात कर लिया. Next thing is medium. Medium is the best platform to learn something. Like समझ रहे हो? Android developers के लिए medium का एक like you have a lot of like just see composable functions that अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे. This is over here written by someone. This is just a 7 minute read. Give it a read. Like try to read more, code more. Uh, like this is how you become a developer. Like जाना है now in Android ये एक अच्छा like I like this particular blog. So now in Android में you can understand कि Android में क्या चल रहा है. Be in the world of Android, be in the like basic जो भी Android में चल रहा है, get a decent idea of it. कैसे क्या होता है. It's not only about Android. When you are learning any kind of framework, no, uh, getting into that, I will say, being in that particular developments like environment, like the environment where developers are interacting, you are following it. तो like अगर ट्विटर पे हो तो go to ट्विटर एंड उसके हैशटैग सर्च कर लेना. रेडिट इज अ गुड प्लेस. हाँ, रेडिट पे भी कभी कभी अच्छा अच्छा चीज मिल जाता है बट ट्राई टू अवॉइड इट. देन मीडियम पे like you can find a pretty great like medium is my personal favorite. Stack Overflow यूज कर सकते हो. LinkedIn पे you can follow people. Follow me. If you want to learn Android, so you can follow people जो कि like they are in this field for a long. They are kind of in the entire like they are in industry, so they know stuff, they post stuff, they are actually active, so you get to learn a lot about it from them too. So it's like getting engaged, getting like giving a 7 minute read to like just a composable function, how a composable function is, what actually they are giving the same example. Great. ठीक है. And you see they also Android also have a video for it. You can just see. That's why I was not trying to get into the coding part. You'll get every code like from this session only. Like I can even give you this link. This is a good link actually. So with the comments, and can I comment it? No, I can't comment. Okay. So how can I comment? No issues. I can. I'll give you the comment. मेरे पास copy होगा ना, so I can give you later on. ठीक है. तो या फिर क्या ही give you what is about to giving. Someone give like thank you GDSC अच्छा ठीक है to giving this, but my point is like this now. Don't rely on someone कि यार वो मेरे को ये आंसर देगा. Just go, see. I was not even trying to come to this particular blog. I just came to Google. I just typed like composable and modifiers about composable, and I like in Android in Medium and something like that, and I came to this particular site and I get the stuff. ठीक है. So this is how it is done. कि थोड़ा सा सेल्फ रिसर्च लगती है. और एक जो like if you are trying to become a developer, first try to become a good Google searcher. Like that's a thing. If like I will say 50% of your development journey starts and like you will excel in it by googling stuff. ठीक है. Like googling the particular like how you break a particular problem statement is something which is required in basic I will say development. जैसे कि तुम्हारे पास एक एरर आई, कल के डेट पे आप कुछ कोड कर रहे हो, यू गेट अ सिंपल एरर, you don't know how it works, just copy it, paste it on Google. ठीक है. कल को तुमको कुछ काम करना है, ठीक है, जस्ट डोंट से कि यार जस्ट एग्जांपल कि तुमको कल को कुछ जैसे तुमको कुछ एक फंक्शनैलिटी और ऐड करनी है, तो जस्ट डोंट पूरा फंक्शनैलिटी को गूगल करने की जगह ट्राई टू ब्रेक इट इनटू द फीचर्स दैट यू डोंट नो. जैसे कि कैसे ही कोई चीज अगर शेयर होता है, जो डोंट जस्ट ट्राई टू गूगल की हाउ टू क्रिएट अ न्यूज, try to Google some stuff ki how to get data from and like how to get data from like online from internet. I will say how to get data from internet. Try to Google these stuffs. ठीक है.
तो एक होगा कि हाँ यार न्यूज़ के लिए मेरे को डेटा चाहिए होगा तो कहाँ से लेंगे, एंड देन हाउ टू, अगर तुम्हें शेयर करना है तो ट्राई टू गूगल की हाउ टू शेयर लिंक लिंक या फिर हाउ टू शेयर स्ट्रिंग, तुम्हारे जो भी लिंक होगा वो स्ट्रिंग होगा, हाउ टू शेयर अ स्ट्रिंग इन एंड्रॉइड। तो बाय दिस यू विल रीड समथिंग कॉल्ड इंटेंट, देन इंटेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लो, हाउ व्हाट इज इंटेंट, हाउ इंटेंट वर्क्स, and this is the flow of it. It's not ki you will get to know everything in a session, in a two session, in a course or something. You need to Google. That's it. You need to Google, you need to read, you need to go into documentation, you need to ask people, you need to go to like communities, follow some people, and you will become a developer. So this is all about becoming a developer, becoming like getting the basic notion of it. And yeah, it's already been 51 minutes. थोड़ा लेट से start किए थे, so 45 minutes. So speaking for 45 minutes, that is, I guess, kinda okay. So do we have Ayush? Like, is Ayush here? He recently winded up. Let me text him. Uh, okay, he's already here. So hi Ayush. So Hi. it's kind of puja, so I'm not trying to extend it any further. Yeah. क्योंकि people And will what feel you like, said was very much true that we need to learn to Google stuff first in order to be a developer. yeah, that's true. Like you are a developer, right? So you know this thing ki how important is googling this stuff, how important is to break the problems into some sections, right? You Yeah, cannot exactly. Google a whole stuff, right? You need to Google small stuffs, and this is how you become a developer, right? So yeah. So Yeah, validation once makes it we a get bit. the basics, the docs are more than enough. Yeah, so basically, for Android docs is something now. I was wondering one day, like I was sitting in my office and I was like, yeah, those are SD3s, right? So SD3 know, I guess I was thinking SD3 knows everything. They are great. They are super. They were reading the same documentation that I was reading, and I was like, okay, so they also, after having this much of experience, they still come to the documentation and read it. Because there is no other source of truth except the documentations, right? Yeah. So yeah, this is how you do this. Medium and dev.to are very much effective. हाँ 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 हाँ, that is great. And best thing is कि go to particular stack का documentation और वहाँ से documentation से पढ़ो. So that's great. ठीक है आयुष, तो let's wind it up, I guess. Yeah, uh, it's that was Sunday, an amazing Sunday session. evening. Yeah, that was an amazing session. Thank you everyone. Go and study Android, You become guys have any Android. doubt? Comment What? in. If you guys have any doubt, हाँ comment हाँ, it just below. comment it down or just simply ping someone on like अपना टेलीग्राम चैनल है ना. तो that will do. ठीक है, finish कर लो अपना. Thank you. ठीक. Okay.